Assalamualaikum friends, Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. I hope so that all are you happy and well. So in today's video handcrafts ideas हम आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी. सो व्यूअर्स, आप लोग इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इनसे आइडियाज़ ट्राई कर सके. व्यूअर्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो. डाई फैब्रिक क्राफ्ट्स फॉर स्टिक डेकोरेशन. मेकिंग थिंग्स विद फैब्रिक is always a satisfying project. If you are like me, you probably have a large stitch of fabric and scrap that are just screaming to be made into something. Or if you don't have fabric but still want to make something, just take a look in your closet. Chances are that you have some old clothes that you can use for fabric. After you check out some of these dye fabric crafts, you will be teaching to use up some of that fabric, no matter where it's come from. Beside making placement or tables, donuts, they are friendly for other fabric projects to do for the home. One of my favorite crafts to do at Christmas is making a collection of fabric tree. They look so cute ornamentally or shelf. I like to make them out of burlap for a warm rustic look. Another way that I have used burlap in the making burlap flowers. They are so nice for adorning any kind of rustic decoration. I hope ये अमेजिंग शैली से आइडियाज़ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे व्यूअर्स. सो आप लोग इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा. एंड मज़ीद ऐसे होम डेकोरेशन से रिलेटेड आइडियाज़ क्रिएट करने के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ टच में रहिएगा व्यूअर्स, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग इनसे आइडियाज़ क्रिएट कर सकें. सो आप लोग हमारे चैनल के साथ टच में रहिएगा. हमारी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.